Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and completed all the exercises of Unit 6 negative sentences of your English grammar book. And I'm sure all of you must have completed all the exercise of Unit 6 negative sentences neatly in your English grammar book. Students, today I'm going to start with Unit 7 of your English grammar book, Interrogative Sentences. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 25. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 25 as I'm going to start with Unit 7 Interrogative Sentences. Now, in kinds of sentences, we have already learned that interrogative sentences are questions. All these sentences which begin with a capital letter, end with a question mark, and they ask something, they are questions. And the other name for interrogative sentences is question. All the questions, जितने भी questions हैं, उनको हम interrogative sentences बोलते हैं. So you need to keep in mind that all the questions are known as interrogative sentences, or interrogative sentences are questions. Questions, interrogative sentences, questions. Now, in this particular unit, you will learn how to frame interrogative sentences from different statements. Fine. Now, let's look at the examples. Now, first of all, I'm going to explain the examples. The first one. Am I the monitor? Am I the monitor of the class? Am I the monitor of the class? Now, look at this sentence. Till now, तो आपके दिमाग में था when are you coming, where are you going, where do you stay, how are you, what is your name. कि questions are generally formed with when, where, है ना, how. But अभी हम सीखेंगे कि question are also formed with the helping verbs. Or you can see we have started this question with am, which is a helping verb. Am I the monitor of the class? This is a question. Fine. This is a question beginning with the helping verb am. Am's is capital. You need to keep in mind that all the interrogative sentences means the questions always begin with a capital letter and you end with a question mark. So, first sentence क्या है हमारा? Question, am I the monitor of the class? Beginning with the helping verb am. Fine. The second example is, are the peacocks dancing? And at the end, question mark. Now look at this question. This again is starting with the word are, which is an helping verb. Fine. So are the peacocks dancing? At the end, what can you see? Question mark. So you need to keep in mind that the interrogative sentences, they also begin with the helping verb. Now the third one. Is it a rainbow? Is it a rainbow? And at the end, question mark. The question is starting with the word is. Again, is what? Is an helping verb. और इससे ही हमने question begin किया है. At the end, question mark. Is it a rainbow? Fine. Now, the fourth one. Was Ritika
absent yesterday. Was Ritika absent yesterday? At the end, what is there? Question mark. किससे क्वेश्चन स्टार्ट किया है? Was से. Was क्या है? Helping verb. Is, am, are, was, were, has, have, can, could, should. These are all helping verbs which helps the verbs in completing the meaning of the sentence. And you can see we have framed so many questions with the helping verbs. Fine. Now, अभी आपको आगे पता चलेगा कि why I am explaining this. Fine. Now the fifth one is, were you out of station? Were you out of station last week? At the end, question mark. हमने question किससे begin किया? Were से, which again is a helping verb. Was, were, is, are, am. These are all helping verbs, and you can see कि they also, we can frame questions starting with the helping verbs. Now the next one, 6. Can I sit with you? At the end, question mark. So you can see we have started our question with the helping verb can, right? But what is important? All these helping verbs, इनका जो first letter है, that is capital. Because you need to keep in mind, the questions always begin with a capital letter. Rather, all these sentences, whenever you write any sentence, you must begin with a capital letter, and questions end with a question mark. Now the 7th one. May I help you? May I help you? Again, this is a question beginning with the helping verb may. So, अभी आपने देखा so many helping verbs. Am, are, is, was, were, can, may. We have begin our question with the helping verbs. Now, I'll erase these and write some more examples so that the concept gets more clear to you. Now, the 9th one. Sorry, the 8th one. Will you stop? Will you stop talking? At the end, question mark. We have begun our question with the helping verb will. Fine. So, will you stop talking? This again is a question. Then, the 9th one. Are there too many? Are there too many mistakes in this essay? At the end, question mark. Again, we have begun our question with the helping verb are. ये भी एक question है. And the last example is, am I old enough? Am I old enough to drive a car? Am I old enough to drive a car? We are beginning our question with the helping verb am. So again, this is a question. So in these 10 examples, you have seen that we can frame our questions starting with the helping verb. Fine. Now, first of all these sentences which I had written, they are all questions. Fine. ये सारे questions थे, है ना?
and a sentence that asks a question is an interrogative sentence. जो भी हम कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. एंड you must keep in mind that we always begin our interrogative sentence with a capital letter and end with a question mark. Okay. Now, look at some more examples. You need to compare these sentences. Fine. Now, I have written one sentence. Ritu is confident. Fine. This is a simple sentence, simple statement. This is a statement. Ritu is confident. Fine. Now, if I want to change this statement into question, what will I do? Suppose इसको मुझे question में change करना है, तो मैं क्या करूँगी? और I am going to use the same words. I am not going to add any word. मैं how, where, when कुछ भी नहीं add करूँगी. बिकॉज अभी जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें आपने क्या देखा था, ऑल दी क्वेश्चंस दे वर बिगनिंग विथ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब. सो नाउ इन दिस सेंटेंस विच इज द हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब. नाउ हाउ डू वी फ्रेम द क्वेश्चन. अब हम ऋतु सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. सो नाउ वी विल फ्रेम आवर क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब इज, कीपिंग इन माइंड that we always begin a question with capital letter, so is I will be capital. So our sentence, अब हमारा जो helping verb है वो पहले आ गया and हमें ये पता है कि we always begin a question with capital letter, तो हमने इसका I capital कर दिया. Now this Ritu will come after the helping verb. अब क्योंकि ऋतु क्या है, proper noun है, name of one particular person. Now Ritu is the name of one particular person, proper noun है, तो ऋतु का R capital ही होगा, है ना. सबको पता है कि proper nouns are always written in capital letter. So our question will be, is Ritu confident? And at the end, what are we going to put? We are going to put a question mark. So is Ritu confident? ये हमने question frame कर दिया किस statement का, Ritu is confident, keeping in mind कि we have not added any other word. इन्हीं three words को लेके we have from the question starting with that helping verb is. Fine. So now in this unit we'll be learning how to frame interrogative sentences. Interrogative sentences are what? Nothing but question. Okay. Now let's look at the second sentence. Shivam and Aryan are late. ये हमारा स्टेटमेंट है. फाइन. नाउ वी नीड टू फ्रेम अ क्वेश्चन of this statement. Fine. First thing, what you need to do is you need to know how to identify the helping verb. Subject क्या है? शिवम एंड आर्यन. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था अभी यूनिट 4 में, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होम, शिवम एंड आर्यन. तो शिवम एंड आर्यन सब्जेक्ट है. आर क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है. लेट तो वर्ब है ना. सो अब हमें अपना क्वेश्चन किससे फ्रेम करना है? फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब आर. सो वील बिगिन आर क्वेश्चन विथ आर. नाउ द सब्जेक्ट शिवम, क्योंकि शिवम भी प्रॉपर नाउन है, सो शिवम का एस कैपिटल. एंड आर्यन अगेन इज प्रॉपर नाउन, सो आर्यन ए कैपिटल. हमने आर तो ऑलरेडी लिख दिया है शुरू में. वी हैव स्टार्टेड आवर क्वेश्चन विद द हेल्पिंग वर्ब आर, so we are not going to write it again. So R, Shivam and Aryan late, and at the end the most important thing, put a question mark. तो हमने ये क्या कर दिया? ये हमने question frame कर दिया. Got it? Now look at the next example. I am tired. Fine. ये एक simple statement है. अब इसका भी हमको question frame करना है. So सबसे पहले क्या करना है? We need to identify and underline the helping verb. I subject है, helping verb क्या है? M है. So underline. Because हमारा जो sentence है वो हम किससे begin करेंगे? M से.
So our question will be, am I tired? Am I tired? And at the end question mark. हमने अपना क्वेश्चन किससे बिगिन किया? With the helping word am. Clear? Fine. So you have seen how we can frame our questions of simple statement starting with the helping word. And हमने कोई भी word इसमें add नहीं किया. जो words statements में 3 words इसमें 3 words same है ना? So अभी आप देखो कि हमने कैसे उसी statements में with those words only we have framed our question starting with the helping word. So the most important thing you need to keep in mind is कि आपको helping verb को identify करके underline करना, because वो पहचानोगे तभी तो आप question frame करोगे. Then you need to keep in mind कि हमारा जो question start होता है वो हमेशा capital letter से start होता है. And proper nouns कहीं भी आए sentence में, कैपिटल आई प्रॉपर नाउन्स आए, वो हमेशा सेंटेंस में बिगनिंग में हो, मिडिल में हो, एंड में हो, दे ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर्स. तो ये दीज माइन्यूट थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड सो दैट यू राइट करेक्ट इंग्लिश. फाइन. नाउ अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ एंड मोर एग्जाम्पल्स. पहले कंसेप्ट शुड बी क्लियर. Now, the fourth one. Boys were excited. Again, ये simple statement है, sentence है. Now we need to frame the question. Subject क्या है? Boys. हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर. फाइन. तो अब हमारा क्वेश्चन किससे बनेगा? वर से बनेगा. अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज है, कीप इन माइंड. ये क्या है? बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये नाउन है. और हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. आई होप सबको पता है ना. कॉमन नाउन्स आर द कॉमन नेम्स यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, whereas proper nouns are specific or particular names of person, place, animal and thing. And proper nouns are always written in capital letter. Common nouns are not written in capital letters unless they begin a sentence. अब यहाँ पे क्योंकि हम अपना sentence किससे start कर रहे हैं? helping verb word से start कर रहे हैं. So boy ये common noun है. So boys का भी क्या हो जाएगा? small हो जाएगा. अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन होता, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता, तो उसका हम कैपिटल लिखते. बट बॉयज क्योंकि कॉमन नाउन है तो हमको इसको स्मॉल में लिखना है. सो दीज आर दी थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, है ना. आपने क्लास 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, बट अभी उसका यूज तो यहाँ पे आया. इट इज नॉट दैट कि यू मेमोराइज एंड देन यू वॉमिट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो वर्ड बॉयज वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उससे स्टार्ट किया. बॉयज का हमने बी स्मॉल किया. क्यों स्मॉल किया बी? बिकॉज सेंटेंस में अनलेस प्रॉपर नाउन है सारे वर्ड्स क्या है? स्मॉल है. कैपिटल आई होगा तो कैपिटल में हम लिखेंगे सिंगल आई को, या प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल में लिखेंगे. अदरवाइज ऑल दी वर्ड्स विल बी स्मॉल. सो वर्ड बॉयज एक्साइटेड, एंड एट द एंड व्हाट आर वी गोइंग टू पुट फॉर अ क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क. सो अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स भी क्लियर होने चाहिए, बिकॉज प्रॉपर नाउन्स होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैपिटल में ही रहेगा, उनको चेंज नहीं करेंगे. एंड कॉमन नाउन है तो उनको हमें स्मॉल करना है इफ दे आर नॉट बिगनिंग द सेंटेंस. नाउ द फिफ्थ वन. दे विल पेंट द फेंस. They will paint the fence. Again, this is a simple sentence, a statement. अब इसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. दे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है. फाइन. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल. फाइन. सो बाकी का सेंटेंस तो एज इट इज सेम रहता है. चेंजेस किस में होते हैं? सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब में. सो वील बिगिन आवर क्वेश्चन विद the helping verb will. फाइन. ये हमने will से स्टार्ट किया. फाइन. अब दे क्या है? दे प्रोनाउन है, तो दे जब will के बाद आएगा तो दे का टी कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा? स्मॉल होगा, बिकॉज
हमने अभी तक क्या समझा है कि ओनली प्रॉपर नाउन्स आर टू बी रिटन विद कैपिटल लेटर, सिंगल आई हो तो कैपिटल एंड प्रॉपर नाउन्स है तो कैपिटल. फाइन. सो टी ऑफ दे विल बिकम स्मॉल. So our question will be, will they, and the remaining sentence as it is. कोई वर्ड इसमें ऐड नहीं करना है, कोई वर्ड इसमें से हटाना नहीं है. फाइन. 1 2 3 4 5 वर्ड्स थे तो इसमें भी 5 आएंगे. Will they, the remaining sentence as it is, paint the fence. Sorry, यहाँ पे तो ये full stop. This was a statement. Full stop. Now will they paint the fence? देखो मुझसे भी गलती हुई ना, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ देती, ध्यान नहीं देती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में ही आएगा, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा. जैसे अभी मैंने गलती की, आई फॉरगॉट कि मैंने यहाँ पे गलती से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो वो गलत हो जाता. फाइन. सो whenever you write always revise. हमेशा आप रिवाइज करोगे. मैंने अभी पढ़ा, रिवाइज किया तो आई फाउंड माई मिस्टेक कि देखो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, और अगर मैं छोड़ देती तो गलत हो जाता है ना. तो सेम वे अगर आपने भी गलती कर दी तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा. ये पूरा सही होने के बाद भी इफ यू हैव नॉट पुटिंग द क्वेश्चन मार्क, ये गलत हो जाएगा. सो ये छोटी छोटी चीजें ग्रामर जिसमें मार्क्स कट सकते हैं. सो दीज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू राइट एनीथिंग ऑलवेज रिवाइज. हमेशा उसको रिवाइज करो सो दैट यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. जैसे मैंने भी रिवाइज किया, मैंने गलती से क्वेश्चन मार्क लगाया था, उसको मैंने इरेज करके फुल स्टॉप लगाया. क्लियर. सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? विल दे पेंट द फेंस. दिस इज अ क्वेश्चन. नाउ विल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट था तो हमने विल के बाद लिखा तो टी ऑफ दे विल बी स्मॉल. फाइन. सो कीप दिस इन माइंड. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन solve, he can solve this crossword. He can solve this crossword. Again ये simple sentence statement है. Fine. अब हमें इसका question frame करना है. So first thing हमें क्या करना है? We need to identify and underline the helping verb. He तो subject है. The person of the thing we are talking about, helping verb क्या है? Can. तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन कैन से. कैन सी कैपिटल, सॉरी कैन का सी कैपिटल हमने किया. अब ही का एच क्या होगा? ये यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन. इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ प्रोनाउन. ही क्या है? प्रोनाउन है. प्रॉपर नाउन तो है नहीं कि हम इसको कैपिटल लिखेंगे. सो वील राइट एच ऑफ ही स्मॉल. द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम. सो कैन ही solve this crossword, and at the end what are we going to put? We are going to put a question mark. So you have seen how we have framed questions of simple sentences. Fine. अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो हमने जितने भी अभी क्वेश्चंस फ्रेम किए सब में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? बॉयज था. यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? दे था. और 6 में क्या था? ही था. ये सब क्या है? सब्जेक्ट है. अब आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस इंटरचेंज होती है. किसमें? इन दी क्वेश्चन. फाइन. और सब्जेक्ट अगर आपका प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होगा. सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये ध्यान रखो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा. इंटरचेंज होगी प्लेस. देखा ना आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में था, तो क्वेश्चन में क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब आगे गया और सब्जेक्ट बाद में. ये कैपिटल और ये स्मॉल. ये कैपिटल कब होगा? जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन होगा. प्रोनाउन हो, कॉमन नाउन हो, तो आप कभी भी कैपिटल में नहीं लिखोगे. क्लियर. ये आपको बेटा ध्यान रखना है कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स ऑल द क्वेश्चंस and the helping verb it always comes before the subject in the interrogative sentences. तो आपने सब जगह देखा ना
यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद गया है. ऑल दी एग्जाम्पल्स यू हैव सीन, सो यू नीड टू कीप इन माइंड. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, because we'll be starting with the exercises, and the points to be kept in mind before starting the exercises are that whenever we frame interrogative sentences, first of all, सबसे पहला point, we begin a sentence with capital letter and we end with a question mark. Interrogative sentence means end में आपको question mark लगाना है. Then the second point, अगर हमको sentence का question frame कर रहे तो सबसे पहले हमें helping verb को identify करना है ना, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा. हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. और सब्जेक्ट अगर आपका प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल से ही रहेगा इवन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. लेकिन अगर वो कॉमन नाउन है, प्रोनाउन है, तो आप उसको उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल कर देंगे. जैसे इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा हमने अपने सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल कर दिया क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर नाउन्स नहीं थे. लेकिन इससे पहले के जो तीन एग्जाम्पल्स थे उन तीनों में प्रॉपर नाउन्स और एक सिंगल आई था, है ना. तो अभी याद है कि सिंगल आई इज ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर्स एंड एट द एंड हमें क्या लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क. फाइन, तो आई होप अभी ये समझ में आ गया. नाउ आई कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1 ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये जो रूल्स मैंने समझाया ना, इफ यू रिमेंबर दिस, फिर आप आराम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 1. एंड एक्सरसाइज 1 इज मेक the following sentences interrogative. Make the following sentences interrogative. Now, अब कुछ सेंटेंसेस दिए उनको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज माय वॉइस इज ऑडिबल. AUDIBLE. ऑडिबल मतलब सुनाई दे रही है. ऑनलाइन क्लासेस में आई आस्क ना, am I audible? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? तो आवाज सुनाई देने को क्या बोलते हैं? ऑडिबल. सो माई वॉइस इज ऑडिबल इन दिस रूम. ये एक सेंटेंस है और इसका हमें क्या फ्रेम करना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? दे आर दी क्वेश्चंस. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है ना? सब्जेक्ट क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट माई वॉइस. सब्जेक्ट क्या है? माई वॉइस. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? इज. तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना. आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे तभी ना आप क्वेश्चन फ्रेम कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है. सो क्या हो गया? हम किससे स्टार्ट करेंगे? विद द हेल्पिंग वर्ब इज. सो इसका आई कैपिटल. अब सब्जेक्ट क्या था? माई वॉइस. नाउ माई अगेन प्रोनाउन है, नॉट अ प्रॉपर नाउन, तो माई का हम एम स्मॉल कर देंगे. सो इज माई वॉइस. इज हम पहले लिख चुके हैं तो हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज यू बिगनिंग अ सेंटेंस विद इज. सो आपको याद रखना, ऐसा नहीं कि आप एक इज इधर भी लिख लो. उसके लिए यू ऑलवेज काउंट दी वर्ड्स कि जितने वर्ड्स इसमें हैं उतने ही आपके क्वेश्चन में होने चाहिए. सो इज माई वॉइस audible in this room, and at the end question mark. Now the best thing is to check our mistake is always count the words. How many words were there in the sentence? 1 2 3 4 5 6 7. 7 इसमें है तो 7 इसमें भी होने चाहिए. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स हमने कोई वर्ड इसमें ऐड नहीं किया है. सो
We have begin our question interrogative sentence with the helping verb is, and we have put a question mark at the end. और हमने बस खाली किसमें इंटरचेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेसेस हमने इंटरचेंज किए. द रिमेनिंग सेंटेंस इज सेम. So this is how we frame interrogative sentence. So students, that's all for today. Do watch my video so that you learn the rules जो मैंने अभी आपको interrogative sentences frame करने से पहले समझाएं. What are they? वो ये है that you begin a interrogative sentence always with a capital letter, you end with a question mark. Then, when you frame an interrogative sentence for a simple sentence, first of all, identify the helping verb. Because it is the helping verb from which you will be starting your question, and the first letter of the question is always capital. और जो आपका subject होगा, that will come after the helping verb in the question. And आपका जो subject है, if it is not a proper noun or capital I, you need to make it write with small letters. So with that, I end today's class, children. I'll be continuing the remaining exercise in my next video. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.